Hello everyone, welcome back to our channel. मैं काकू And I'm Sanju. and we are the IC Traveler. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोवा ट्रैवल गाइड के बारे में जो आप लोगों को हेल्प करेगा ड्यूरिंग ट्रैवल. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपने पहले सारी वीडियो सारे एपिसोड नहीं देखे गोवा के तो आप गोवा की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो. Yeah, and in the last video we also shared with you our itinerary. If you want, you can see that and then come to this video. And today we are going to talk about many points, maybe 8 to 9 points, which will cover best time to visit, to how to reach, where to stay, what are the transportation options, what is the budget that we. So we'll talk everything about it. So without taking much time, हाँ ज़्यादा देर नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Okay, let's talk about the best time to visit Goa. Because before you reach, you need to know when is the best time that you can enjoy Goa in the best way possible. So the peak season we can say is from December or November to January last or February first week or so. So that is the best time, but we don't recommend. हाँ, हम लोग उस टाइम को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड आपको मिलेगा. हर जगह आपको फुल मिलेगा. आपको होटल बुकिंग में प्रॉब्लम होगी. आपको फ्लाइट एक्सपेंसिव मिलेगा. और प्लस कहीं पे भी आप फोटो क्लिक करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. And for a man, for a boy, like everything will be expensive, too expensive, too inflated. So that is the time we don't recommend. And then comes the monsoon season. Now monsoon season, if you are not too much into beach activities or beach shacks, then it's okay because everything will be so green. But if you are into those and if you are a first timer visiting Goa, still we don't recommend monsoon season because you'll not all the beach shacks would be closed at that time. They don't allow. And that's so we don't recommend that. So the best time बीच का जो एंजॉय है वो आप लोग मिस कर दोगे. वो आप लोग प्रॉपरली नहीं कर पाओगे जैसे आप लोग बाकी टाइम पे कर सकते हो. So the perfect time would be, according to us, would be October last week or February last week. So at that time the temperature will be very okay because Goa is anyways tropical, so it is either too humid and hot or it's totally rainy. So February last to October last, do remember that and try to avoid anyhow March to May because it becomes the temperature goes way too high and it's too humid and it's unbearable actually. So that is all for best time to visit. हाँ, तो ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट. एंड हम लोगों का सेकंड पॉइंट है कि कितना दिन आप लोगों को चाहिए अगर आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों को कवर करना चाहो एक साथ. तो हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि कम से कम आप 4 to 5 डेज नॉर्थ गोवा में एंड 3 to 4 डेज आप साउथ गोवा में लो. इसलिए क्योंकि आप अगर सिर्फ पार्टी करना चाहते हो या फिर आप सिर्फ वीकेंड में जा रहे हो तो वो अलग सीन है, वो कम्प्लीटली अलग बात है. पर अगर आप पूरा गोवा को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो जो मतलब टूरिस्टी एरियाज है, थोड़ा सा लोकल टच, सब कुछ आपको फील मिले, तो उसके लिए आपको मिनिमम 4 डेज नॉर्थ गोवा में चाहिए होगा. और साउथ गोवा में आप अगर सारे बीचेस कवर करना चाहते हो तो आपके लिए तो 3 डेज भी बहुत कम है क्योंकि साउथ गोवा में बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है, अप्स एंड डाउन है. और एक बीच पे आप जाओगे, एक जगह पे आप जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी देर आपको बैठने का भी मन करेगा. तो उसके हिसाब से 3 डेज तो कम ही है साउथ गोवा के लिए. मैं बोलूँगी तो आप मतलब 4 डेज ही लो, पर फिर भी मिनिमम 3 डेज आपको चाहिए ही होगा. तो 7 डेज टोटल हम लोग पकड़ के रखते हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के लिए. Alright, so now when you're informed with the best time to visit and like how many days you require in North and South Goa, so let's talk about how to reach Goa actually. So we reached by airport, like by air, sorry, and we came out of Goa till Delhi via train. So there are mainly 2 railway stations in Goa. There is Vasco da Gama and there is Margao Junction. And there are also 2 airports in Goa. One is Goa WM Airport and one is Manohar International. That Manohar International is quite a new one, so we don't have much information about that. But we reached Goa via Goa WM Airport, and that is the airport you can take. And
if we talk about the railway station, then we left Goa from Madgaon Junction to Delhi. We took Rajdhani, so that is what we took. And there is one more option that you can take, that is bus, Volvo bus, which is quite comfortable, because I also had that experience. But bus service you can only take from Mumbai or from Bangalore, which is like 12-hour to 16-hour journey. That would be comfortable for you, or else it will be too long. I had that experience because I came to Goa with my friends when I was a bachelor. That at that time from Bangalore to Goa, I took the Volvo bus and it was comfortable enough. और बहुत सारी जगहों से इवन ट्रेन जर्नी बहुत खूबसूरत रहती है, स्पेशली मुंबई टू गोवा जो ट्रेन जर्नी है वो काफी खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जर्नी बोला जाता है. Yeah, that is in our to-do list. And yeah, the bus you can book through Red Bus, and or you can do it through Abibus also, I think so nowadays, because when I booked the bus, I booked it through Red Bus and Abibus was not started till that time. So that is all. Alright, so let's now move on to best places to stay in Goa, both North and South Goa. We'll talk about it separately. So let's start with North Goa first. नॉर्थ गोवा में हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग बागा और केलंगुट के पास रहो. अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, सब कुछ आपको अपने पास ही मिलेगा. और अगर आप चाहते हो कि आप कोई अलग जगह पे रहो तो आप अंजुना के पास भी रह सकते हो. वहाँ पे आपको सनडाउनर्स क्लब आराम से पास में ही मिल जाएगा और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्टे है. और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको थोड़ा सा पीस चाहिए नॉर्थ गोवा में भी जाके, तब आप अड़म्बुल के पास भी रह सकते हो. लेकिन अड़म्बुल मतलब जो बाकी प्लेसेस है अंजुना, बागा, केलंगुट, उन सब से कम 1 घंटा की दूरी पे है. तो अगर आपके लिए वो मतलब ठीक है, हम लोग को वो पीस चाहिए, उसके हिसाब से आप अड़म्बुल पे रह सकते हो. अदरवाइज हम लोग तो आपको रिकमेंड करेंगे कि ऐसे प्लेसेस पे रहो जिसके पास आपको सब कुछ आराम से मिल जाए. We stayed near Baga Beach, Tito's Lane, Tito's Club or Club Members. So these were in a walking distance from us. So if you want to see which the place that we stayed, we recommend that. We booked through Make My Trip. Then you can please watch our episode 1. You will get all the information. और वो बहुत बजट फ्रेंडली था. अगर आपको बजट के हिसाब से चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हो. अगर आपका भी कुछ दूसरा आपको ऑप्शन ऑल्टरनेटिव उस एरिया में कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ पे भी जा सकते हो. ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं साउथ गोवा की प्लेस के बारे में. South Goa, we recommend you to stay near Palolem or Agonda Beach. So those are the 2 places that you can stay. And there are few resorts also. If you want to go on a high-end basis, then there's in near to Kola Beach there's one resort, then Cabo de Rama also. So those are in a high-end manner. But we took an Airbnb which was like a 5-minute scooty ride from Palolem Beach. So that was the best. We have stayed in so many Airbnbs, but that is the best Airbnb that we stayed. You have to watch that. We don't remember the episode number, but please check it in our playlist. बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट हो गया था हम लोगों के लिए. और जो स्पेशली केयर टेकर थे उन्होंने हम लोगों को इतना हेल्प किया. तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, फिर भी हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहे कि डेफिनेटली आप लोग साउथ गोवा पे उस स्टे पे भी रहोगे, आप लोग हमें डेफिनेटली कमेंट पे बोलोगे कि हाँ हम लोगों ने अच्छा रिकमेंडेशन आप लोगों को दिया था. तो हमारी 5th पॉइंट है गोवा तो पहुंच गए, लेकिन गोवा एक्सप्लोर कैसे करेंगे. तो उसके लिए आपको कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप लोग यूज कर सकते हो, हम लोग इसी के बारे में अभी बात करेंगे. So there are basically 4 types of transportation that you can enjoy. The first is scooter, which we also took, and it was very convenient for us. Like Goan roads are very nice. They have nice roads and it's not too crowded, so it was very easy to ride. Also the scooty helped us in tight spaces. So the scooter ranges from 350 to 450. So in that range you will get a scooty, and then we can take a car. आप लोग कार भी ले सकते हो. कार की ऐसे जैसे वहाँ पे बलेनो, थार ये सभी ज़्यादा देखने को मिलता है. बलेनो जैसे कार आपको 1200 के आसपास भी मिल जाएगा, पर अगर आपको थार लेके घूमना है गोवा में तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 3300 के अराउंड. पर वो प्रॉपर रेट है, उस हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप नेगोशिएट कर सकते हो. आपकी
कितने दिन के लिए लोगे उसके ऊपर भी आपका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और एक और ऑप्शन है जिसके हिसाब से आप जा सकते हो, वो है अगर आपको स्कूटी चलाने में या फिर ड्राइव करने में दिक्कत होती है या फिर आपको नहीं आता है, तो आप कर सकते हो कि आप ड्राइवर के साथ भी गाड़ी को मतलब बुक कर सकते हो फुल डे के लिए। Yes, तो everything we are speaking on a per day basis. The scooter price range or the Thar or Baleno price range or with driver, everything on a per day पर basis. जो ड्राइवर के साथ है वो अगर आप बलेनो जैसे कार लोगे तो वो आपको 2000 to 2500 के अराउंड आ जाएगा। प्रॉपरली हम लोग इसके बारे में आपसे नहीं बात करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट हम लोगों को नहीं पता है। और एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है जो आप यूज That कर is the सकते हैं। normal one. Like in your city, in our cities we take Ola and Uber if it's in your city, and so in Goa Ola or Uber doesn't work. They have their Goa Miles app, so that is an application you can download once you reach Goa, and it is very convenient. You'll get a cab in no time. It is the same as you book in Ola or Uber, but the only difference is that you'll have to put some money in advance in that app, but you can take that refund later if any balance remains, so that is okay. तो ये था हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन मोड्स। Alright, so for our 6th point, we'll explore the shopping, like shopping in Goa, but we'll talk about it separately in North Goa and South Goa. So let's start with her because she will be the best to tell you about the market area. तो हम लोग 3 जगह पे गए नॉर्थ गोवा में शॉपिंग के हिसाब से शॉपिंग करने के लिए। तो फर्स्ट था तितोज लेन हमारे पास, तो फर्स्ट डे हम लोग वहाँ पे गए। तितोज लेन पे गोवा में नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा हो, दोनों में आपको जो भी चीज़ देखने को मिलेगा तितोज लेन में आपको सब कुछ मिलेगा। पर उसके अलावा भी वहाँ पे टैटूज, फिश स्पा, सब कुछ आपको एक ही जगह पे एक ही लेन में मिलेगा। और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सेसरीज की भी कलेक्शन, पर्स की भी कलेक्शन, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंजुना फ्ली मार्केट के बारे में, जो ऑलरेडी वीडियो में हम लोगों ने आपको पहले ही दिखाया है। तो अंजुना फ्ली मार्केट है एक हिप्पी कल्चर टाइप के मार्केट बोल सकते हो। वहाँ पे आपको हिप्पी स्टाइल के कपड़े, पर्स, बैग जो कि फॉरेनर मैक्सिमम यूज़ करते हैं उस टाइप के, और कुछ हैंड पेंटेड हैंडीक्राफ्ट चीज़ें आपको मिलेगा। अलग अलग टाइप के सुविनियर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अंजुना फ्ली मार्केट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था वो। और उसके बाद एकदम अनएक्सपेक्टेड जगह पे हम लोगों ने शॉपिंग की, वो था जब हम लोग बेसिलिका और बॉम जीसस पे गए थे। वहाँ के पास वो प्रॉपर एक मार्केट नहीं था, पर जैसे होता है ना कोई भी टूरिस्ट एरिया के पास में कुछ दुकान होते हैं, वहाँ पे मतलब आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि पूरी मार्केट एरिया घूमने के बाद मुझे वहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें मिली। वहाँ से मैंने एक हैट खरीदा जो कि अराउंड 150 के आसपास था, जो तितोज लेन में मुझे 250-300 आराम से उस प्राइस में मिल रहा था। और स्पेसिफिक मैं एक पर्स के बारे में बात करूँगी। मैंने वहाँ से एक राउंड पर्स लिया था जो मैंने तितोज लेन पे पूछा था। मैंने सोचा था कि मैं वो खरीदूंगी, पर फर्स्ट डे मैंने नहीं लिया, बाद में मैं ले लूँगी सोच के। तो उसका प्राइस था 400-450 से नीचे वो लोग नहीं देने वाले थे। वो सेम पर्स विदाउट नेगोशिएशन मुझे 250 में मिल गया वहाँ पे, मतलब बेसिलिका और बॉम जीसस के बाहर। तो वो काफ़ी शॉकिंग था। आप लोग डेफिनेटली वो जगह ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं साउथ गोवा के बारे में। South Goa actually is so peaceful that you'll not even get a market area properly in any of the beach, or it's very peaceful. Like there's not much hustle there, and so the main market area that we mainly got is in Palolem Beach. Like before you enter Palolem Beach, there's a total market area, so you'll get products there. And it was the same, like whatever we saw, the generic Goan specific products in North Goa, we like saw the same things in like in Palolem market. So that is all. I think so. हाँ, तो यही था मार्केट के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं गोवा की स्कैम्स के बारे में। ऐसे तो आप जहाँ पे भी ट्रैवल करो स्कैम आपको मिलता ही है, लेकिन लकीली हम लोग को गोवा में कोई भी स्कैम फेस करने को नहीं मिला। पर आप लोगों को भी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले हम लोग आप लोग को अवॉइड कर रहे हैं। So there are a few scams that we'll talk about today.
The first thing is it's a very common scam, and that's why we also took the awareness and went to Goa. So it's the scooter number plate scam. So the thing is, always take a scooter with a yellow number plate, whichever scooter dealer you take the scooty with. No matter how much the scooter dealer tells you that white number plate would be okay, don't take it, because the police or the cops will fine you 100%. Always take a scooter with a yellow number plate. So, and that goes with the cars also. Take a car which has a येलो नंबर प्लेट एंड देन वी हैव टू टेक अ वीडियो. हाँ, और आप जब भी स्कूटी लेते हो, स्कूटी के साथ हेलमेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, क्योंकि गोवा में जो भी स्कूटी चलाते हैं उनको हेलमेट पहनना ही है. और आप जब भी स्कूटी लो, स्कूटी पे कोई भी डेंट है पुराना, कुछ भी ऐसा क्रैक वगैरह है, स्कूटी हो कार हो, आप उसका पहले वीडियो या फिर फोटोज ले लो, ताकि बाद में आपको डीलर ये ना बोले कि वो आपसे हुआ है और वो फाइन आपको ना भरना पड़े. That is a very common scam, and we also did that thing. Like we took a video of the whole scooty that we booked, and then the prior scratches that were there in the scooty, we took photographs of that. और सेकंड स्कैम आप लोगों के साथ ये हो सकता है, ये बेसिकली पीक सीजन पे होता है. होटल्स आपका बुकिंग हो गया है, मतलब आपकी साइड से, और उन्होंने भी बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, पर आप जब स्पॉट पे जाओगे वहाँ पे आपके लिए रूम कोई अवेलेबल है ही नहीं, खाली है ही नहीं. वो बेसिकली पीक सीजन में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी किसी को वो रूम दे देते हैं. तो उसके लिए आपको प्रॉपर एप्स जैसे कि the thing is, even if you book it through the trusted apps like Agoda, Booking.com, Make My Trip, Goa, and there's so many right nowadays. So Clear Trip. So even if you book from those apps, but still what happens? This problem arises. So do one thing as a solution before going to Goa. Even if you book from those trusted apps, try to call, call the hotel reception and confirm. If they don't respond, then call the application or the agent through which you book. मतलब अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग होटल चेंज कर लो, वही ईजी होगा. और नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम लोग का है, जब भी आप लोग वाटर स्पोर्ट्स करोगे गोवा में, तो बेसिकली पैरासेलिंग के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ उस टाइप की, क्योंकि वो आपको एक ही राउंड करने के लिए देंगे. मेनली स्कूबा डाइविंग के बारे में जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ. वहाँ पे क्या होता है, एक डाइवर आपके साथ जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट होने के बाद आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके साथ थोड़ा छेड़खानी करके ऑक्सीजन लेवल कम कर देंगे, ताकि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो और आप खुद ही ऊपर आ जाए. तो वो सब प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो इसके लिए आप पहले ही अच्छे से बात कर लीजिए कि हाँ मुझे इतना देर तो रहना है वहाँ पे. And the next scam that we almost faced it. We didn't face it because we never go to adventurous about all those. Like we faced it in different days with different guys. So on a particular day, wherever we're riding our scooty, and then if we stopped, we always felt that someone is following us. So whenever we stopped to have some water, so that guy came and he told that if you want to go to a rave party, so don't fall into all those. And on a different particular day, a different guy came and told us about a buffet dinner at a hotel. So try not to, in simple words, try not to be very adventurous. Just follow our itinerary and have a peaceful trip. हाँ, तो वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए भी. और लास्ट स्कैम के बारे में जो हम लोगों ने फेस किया था, पर अगेन हम लोग ट्रैप में नहीं फंसे, वो है स्क्रैच कार्ड का. आपको पहले वो लोग बोलेंगे रिवॉर्ड्स है, टीवी है, ये है वो है, पर एट द एंड रिवॉर्ड्स होता है होटल रूम्स के ऊपर ही. तो रूम्स की बात आए तो आप लोगों को एक जगह पे वो लोग लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. उस पर क्या होगा, आपका बेनिफिट हो ना हो, आपका एक दिन पूरा निकल जाएगा. तो हम लोग यही बोलेंगे आपको कि वो चीज़ भी आप लोग इग्नोर करें. तो इतना ही स्कैम है गोवा का, जितना हम लोगों को पता चला उतना ही हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की. तो अभी बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बजट के बारे में. तो हम लोग बजट जो रखेंगे वो रखेंगे एक्सक्लूडिंग फ्लाइट, क्योंकि कोई कहीं से भी आ सकता है और फ्लाइट की रेट कभी भी कुछ भी हो सकती है, और कोई बस या ट्रेन भी चूज कर सकता है अपने हिसाब से. सो लेट्स स्टार्ट. So
about the budget, we have made the budget according to whatever we have spent in Goa. So for example, if you can see, we have taken into account the price of our stays or hotel according to what we paid. So if your hotel costs you rupees 1500 or rupees 5000, then just put down your respective amount and compute the total according to that. Next, for the meal, we have taken into account all the 4 meals, which is breakfast, lunch, evening snack and dinner, and we have taken rupees 1500 as an average for 2 people. Then talking about the scooty, in North Goa we have paid rupees 400 per day, but if you rent a car, then you can put your rented amount in the place of rupees 400 and compute the total as per that. So adjust as per whatever amount it has costed you as per your convenience. Then we have the entry charges, and at the end we have taken miscellaneous into account as per if you want to spend some more time in shacks or let's say the beach clubs more often. The same goes for South Goa part, and at the left bottom you can see the cab charges. Now whether you travel by train or flight, till your stay near Kalangut or Baga, it would take almost rupees 1500, and even if you travel to South Goa from the airport or train station, it would cost almost the same, so that you can take as a mandatory expense. Next, if you are only visiting North Goa or South Goa, then you can ignore the cab charges, which is rupees 3000, and compute the total as per that. So if you only visit North Goa, then for 2 people the total would be rupees 25,700 excluding flight, train or bus. And if you are visiting only South Goa, then for 2 people the total would be rupees 15,300 excluding flight, train or bus. And if you are visiting both North and South Goa like us, then for 2 people the total would be rupees 41,000 excluding flight, train or bus. So let's end this video. Already वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और वीडियो जितना हो सके हम लोगों ने उतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है. ये गोवा की लास्ट हम लोगों की लॉन्ग वीडियो है. शॉर्ट्स आती रहेगी. And we are so feeling emotional because the Goa playlist has finally ended. So if you have not watched our playlist, please watch from episode 1 to 7. You'll get so many information we have tried to give as much as possible, and it will really help you. हाँ, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं आप, तो मोस्ट वेलकम. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए. और कोई ऐसा भी है जो वीडियोस देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. For our next trip, you'll travel with us to Jaipur. So interesting things coming up. हाँ, तो एवरी सैटरडे सेम हम लोग का वीडियो जो जैसे चल रहा है वैसे ही आता रहेगा. तो अभी के लिए बस इतना ही. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी जानना हो, कुछ अच्छा लगा बुरा लगा सब कुछ, और अगेन बोल रहे हो सब्सक्राइब कर दीजिए. बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट.